So good morning, everyone, and we'll start with technical and derivative updates first. So what we saw yesterday is that Nifty did make an attempt to reclaim the 16,000 odd mark, and it was led by majorly by FMCG, reality, and auto, with sharp short covering seen in metal names too. So it was a sharp short covering rally, and it managed to recoup all its losses of the previous day. So it did made an attempt to close above 16,000 odd levels, and it closed near 15,989. So now technically the Nifty has what do you say, closed above the swing high of 15,930, and till we hold 15,750 mark, we may make an attempt to go past 16,100, 16,250 odd levels. And even on the sectoral front, Nifty FMCG, reality, and auto closed with very good gains, and managed to post gains of over 2%, while Nifty Bank, IT, and Media too closed strong with close of 4% worth of gains. What we saw, Bank Nifty outperformed the Nifty as it had a steady rise throughout the day, and it opened about 34,000 odd mark, and it managed to close about 34,000 for the first time in over almost 20 odd days. So it's indicating that bullish momentum shall continue going forward till we hold the 33,700, 33,800 odd mark. So the immediate resistance, that is the 50-day exponential moving average, is placed at 34,378. So if we reclaim this said average, then we might make a dash towards 35,000 odd mark. So we need to see how things work out going forward. Even from the institutional side, FI did had a small net sell figure of 330 odd crores, while DI had a net buy figure of 1464 crores. From the derivative front, what we saw is Nifty future OI did show some long addition to the tune of 0.14 million shares, and now the total outstanding positions currently stands at 14.27 million shares. Even the breadth was very good. The advanced decline ratio was very heavily in favor of bulls. So it was majorly a broad-based rally. So yeah, things look positive. While Nifty PCR OI2 saw some sharp uptick, and it closed at 1.27 as compared to its previous close of 0.93. So, and from the option distribution, what we saw is the 15,900 and 16,000 strike put saw sharp addition. So the put writing has shifted upwards. Previously it was 15,600 and 15,800, and so now the put writing has shifted upwards towards 15,900 and 16,000. So this indicates that for this expiry, 15,800, 900 and 15,850 will be held by Nifty, while we may make dash towards 16,100, 16,200 as per the option data, as the call option major writing was seen in 16,200 and 16,400 strikes. So basically the put writing was very heavy rather than call writing. Even on Bank Nifty futures, it saw a sharp long addition, wherein the total OI stands currently at 29.20 lakh shares as compared to its previous of 25.0 lakh shares. So it's basically an addition of 4 lakh shares in one day, which is 16% rise in Bank Nifty open interest. So it is a sharp addition. So we may expect Bank Nifty to lead the rally if we are to entertain thoughts of 16,200 marks. Stock wise, if we see, yesterday long additions were seen in India Mart, ABB, Abbott, Cummins India, while some shorts were seen in IOC, HDFC Life, ONGC, HAL, and L&T. From the FI statin futures and options, we saw index futures there a net buy figure of 1738 crores. Index option they had a small net sell figure of 1131 crores. Stock futures they had a net buy figure of 1497, while stock options they had a small net buy figure of 2.39. And on the call front, in the technical report, we have given buy in DLF. We can buy in the range of 327 to 329. Stop can be placed at 321. Target is 342. While in the derivative report, we have given buy on SBI futures
You can buy in the range of 478 to 481. Stop can be placed at 469. Target is 499. So that would be it from my end. I'll pass it over to Bunty sir for further research updates. Over to you, sir. Thank you, Nikunj. Good morning, sir, and good morning, team. Few updates from research side. As we have seen before the result starts, there are the companies who are giving provisional updates on the Q1 FY23 number. So we'll start with that. Godrej Consumer has shared the Q1 FY23 number. Consolidated revenue had grew in high single digits, and India business grew in double digits. Also, rural markets has witnessed lower growth compared to urban. Indonesia revenue decline was in high single digit due to high base of hygiene product sales. Africa, USA, Middle East, and Latin America business grew in double digits. So GSPL expects recovery in consumption as well as in gross margins in the upcoming quarters due to correction in price of palm oil derivatives as well as crude oil. So we are very much bullish and have a buy rating on GCPL with a target price of 1017. Secondly, Dabar has also shared its number. Consolidated revenue grew in mid to high single digit. India business had grew in high single digit. International business remained slightly lower, increase in low single digit Indian rupees due to currency devaluation of Turkish lira. Also, operating margin has continued to remain decline. It has declined by 200 bips on a YOY basis. But if you see, margins has normalized to pre-COVID levels during this quarter. Also, Dabur targets for higher than industry growth in medium to long term with stable margins despite there are inflationary pressures. We very much remain positive on the Dabur with a buy rating with a target price of 672. On the Titan, Titan has shared its number. Their sales have grew 3x during the quarter, but it is on a low base and no COVID restrictions. Also, jewelry division, which contributes approximately 85% to the revenue, has grew 2x on a YY basis. Watches and wearables achieved its highest quarterly revenue with a growth of 1.6x on a YY basis. Eye care division has also grew by 1.8x on a YY basis. Fragrance business grew 2.6x, whereas fashion accessories grew 3.3x on a YY basis. So overall seems to be on a lower base. The growth has remained strong for the Titan as such. Next update is on the edible oil. There is a fall in global prices. Government has directed edible oil manufacturers to further cut the MRP of imported cooking oil such as palm oil, soya bean, and sunflower oil by at least 10 rupees per liter within a week and maintain uniform of the same brand of oil across the country. This seems to be very much positive for many FMCG companies like HUL, Britannia, and GSPL and the consumers. However, for the edible oil companies, there could be some negative impact because of this price deflation. We currently have a buy rating on HUL, Britannia, GCPL, and Marico. Next update is on the PVR Cinema. PVR Cinema has opened 4 screens in October in Ghatkopar. Within this launch, PVR Cinema consolidated its foothold in Maharashtra with 137 screens in 29 properties and 233 screens across 51 properties in West. With this opening, PVR strengthens its growth momentum in FY22-23 with total 854 screens at 173 properties in 75 cities. We continue to remain positive on the stock with a target price of 2150. In the financial sector, Equitas Small Finance Bank has reported its provisional number. Gross advances have grew by 22% on a YY basis and 5% on a Q1Q basis and stood at 21,700 crores as of Q1 FY 2023. Disbursement has grew by 1.5x on a YY basis, but if we compare on a sequential basis, on a Q1Q basis, it has de-grew by 1%. As we have seen, Q4 always remains the best quarter for the financial industry.
Total disbursement for this quarter Q1 FY23 stood at 3,230 3,240 crores approximately. On the deposit part, deposits have grew by 19% on a YOY basis and 8% on a sequential basis, that is Q1Q, and stood at 20,400 crores. So it seems to be the positive numbers. Lastly, RBI has came out yesterday with norms to boost the forex inflows, actually to support the rupee because it is depreciating at a faster pace. And RBI has said that they are closely monitoring the liquidity conditions in the forex market and will step in as in needed in all segments to elevate dollar tightness. So the measures are as follows. They have exempted CRR and SLR on incremental FCNR and NRE term deposits. So historically, what is generally when you raise the deposits, you have to set aside 23%, approximately 23% CRR plus SLR on these deposits, but they have exempted incrementally on these FCNR and NRE term deposits to increase the forex flows. Also, RBI has permitted banks to raise these FCNR and NRE deposits without reference to the extant regulation on the interest rate with effect from July 7. These two, the one exempt from CRR and SLR is up to November 4, and this interest rate exempt is up to October 31, 2022. Also, RBI has increased the ECB route automatic borrowing from $750 million, which is currently, and for the financial to $1.5 billion. So that seems to be the RBI is more focusing on the rupee depreciation, and inflationary part could be supported by lower crude oil. So both these concerns from the macro perspective, inflation and the rupee depreciation, is trying to support from the government or from the RBI per se. So that's it from my side. Over to you, Hitendra. Thank you, sir, and good morning, everyone. We'll see more further updates. First, we will see Bharti Airtel with its subsidiary Bharti Airtel International, that is Netherlands, has raised a tender to offer its buyback of $450 million, that is 3,550 crores, which manages Airtel Africa business. And the company has also issued a tender offer to purchase more 300 million worth of it. That is 5.35 guaranteed senior notes of $1 billion, which will be due in 2024. And this offer would commence from June 21 and will expire on July 19th. Secondly, if you see Reliance Industries with its arm Reliance Retail has signed an agreement with a US major, that is Gap Inc. And this Gap Inc. would be now sold, and they have made a partnership and it will be sold under Reliance Retail chain. Power Grid Corporation is also approved to raise up to 11,000 crores in terms of bonds and loans. 6,000 crores would be raised from domestic market by issue of secured and unsecured, non-convertible or cumulative or redeemable tax-free bonds under private placement basis in 23-24 and 20 tranches. Thirdly, if you see macro developers also given their update, they have their sales have nearly jumped threefold annually. That is 2,814 crore in the April to June quarter, and they are saying this would be the strong demand from the residential properties. Basically, the macro developers sales under Lodha brand. NTPC with the subsidiary NTPC Renewable Energy has signed an MOU with Gujarat Alkalis and Chemicals to collaborate in setting up India's first commercial scale green ammonia and green methanol projects. Lastly, if you see, IndusInd Bank has announced a strategic partnership with Mo Engage. This would be the insights and led customer engagement platform for Gen Z digital banking experience to their customers, and they would leverage their technology with Mo Engage technology platform. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more updates. Thank you. Thank you, team. Good morning. Bajaj Hindustan is a MPA as per lenders. So the debt recast plan is under discussion. So we, in Bajaj Group, there are two companies which we don't like. One is Bajaj Hindustan because they were always high debt, and there is one more company, which is Bajaj Corp. Now it is called Bajaj Consumer. So that also we don't like, and even Bajaj Electric belongs to Shishir Bajaj Group, where the corporate governance has not been too great, but now Bajaj Electric is doing better. So leaving Bajaj Electric, other two Bajaj in this Shishir Bajaj Group,
Now we are always, they are always suspect, so one has to be very careful. India toy sector has turned net exporter due to government efforts. In FY19, India imported almost $371 million of imports of toys, whereas the import has come down to 110 million. Whereas same period FY19, our exports were 202 million. Today it is $326 million. So in FY22, so that means net we have become exporters of toy. In every aspect, things are changing. Knight Frank has come with a report on residential sales. Now the sales for almost 8 cities they have taken for the first half of this year till June. It says the sales has hit 9 years high in this period. So last time we saw this kind of sale was in 2013 first half, where 1,85,577 units were sold. Now this half 1,58,705 units have been sold. So after a long time, the real estate sector has picked up, and if you compare year-on-year basis growth, it is higher by 60%. So where is the growth coming? NCR is a region which has witnessed 154% growth. So that should be very positive for DLF. Hyderabad is one more segment where there has been very good growth, and next is Ahmedabad city has a very good growth. And Mumbai and Pune have seen reasonable growth. So I think real estate as a sector we like for a long term. Consumer electronic and smartphone makers have decided to extend their production cut till August and defer their plan for ramping up production for the festival season. So 1 month before the festival season, they will increase the production. There is lack of demand. That is what the ground level is saying. So that is bit negative, for consumer durables like Volta, Savils, but there will be a temporary pullback or rally in these stocks, but there is lack of demand. Air conditioner makers, washing machine makers, there is lack of demand. Loda Q1 sales booking up nearly threefolds to 2,814 crores. Collection is higher by 53% at 2,616 crores. Net debt is down by 450 crores to 8,858 crores. Nykaa Fashion expands to men's innerwear and athletic shore category with Glot. And Raymond 10X Reality, step-down subsidiary of a company, has signed JDA, a prime project in Bandra. So the revenue potential is 2,000 crores. Raymond, as a trader, you can have a trade, but as an investor, we are not very positive on the stock. In the last news, Railtel has finalized agencies to execute for work of video surveillance system for 756 major stations, and the project would be completed by January 2023. Now, all these railway stocks are good dividend yield stocks, but when it comes to the reality, it is a bit difficult. With that, over to you, Sitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग एक कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. फर्स्ट जो अपडेट है वो जो रिजल्ट सीजन के पहले जो क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं उनके ऊपर है. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के अपडेट है उसमें उनका जो रेवेन्यू कंसोलिडेटेड वो ग्रो हुआ है सिंगल डिजिट में, और इंडिया का जो उनका बिजनेस है वो डबल डिजिट्स में है, बट रूरल मार्केट्स है वो थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रहा है कंपेयर टू अर्बन. इंडोनेशिया का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है सिंगल डिजिट में, क्योंकि उधर हाई बेस जो हाइजीन प्रोडक्ट्स का सेल है उसके कारण. अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में उनका बिजनेस डबल डिजिट में ग्रो हुआ है. ओवरऑल करंटली हमारा बाय रेटिंग है स्टॉक के ऊपर, और जो टारगेट प्राइस है वो 1017 है.
नेक्स्ट अपडेट है डाबर के ऊपर। डाबर का भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो हुआ है मिड टू हाई सिंगल डिजिट में, और जो इंडिया का जो बिजनेस ग्रो हुआ है वो हाई सिंगल डिजिट में है, और उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इंक्रीज हुआ है लो सिंगल डिजिट में ड्यू टू जो करेंसी का डिवैल्यूएशन है टर्किश लिरिया में, इसी कारण ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी डिक्लाइन हुआ है 20 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर। सो ओवरऑल हम लोग देखें तो पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर। टारगेट प्राइस जो है वो 672 है। एडिबल ऑयल्स है उसके ऊपर अपडेट है कि अभी जो ग्लोबली उनकी जो प्राइस नीचे गिर रही है उसके कारण गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स है उनको जो प्राइस है एमआरपी है वो इम्पोर्टेड कुकिंग ऑयल्स की, जैसे कि पाम ऑयल है उसमें, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, उसको कट करना है 10 रुपए में 10 रुपए से, और वो विद इन अ वीक होना चाहिए। और जो ओवरऑल सेम ब्रांड की जो ऑयल है अक्रॉस कंट्री उसकी जो यूनिफॉर्मिटी रहेगी एमआरपी में वो सेम रहनी चाहिए। ये पॉजिटिव रहेगा एफएमसीजी कंपनीज के लिए, जैसे कि उसमें एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और जो कंज्यूमर स्टॉक्स है उसके लिए। बट ये जो ऑयल एडिबल ऑयल कंपनीज हैं उनके लिए स्लाइटली निगेटिव है, बिकॉज इसका जो प्राइस डिफ्लेशन है उसके कारण करंटली हमारा बाय रेटिंग है एचयूएल के ऊपर भी, ब्रिटानिया के ऊपर भी, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और मेरिको के ऊपर। टाइटन की भी कल Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के अपडेट आए, जो उनका सेल्स ग्रो हुआ है 3x से ड्यूरिंग क्वार्टर, क्योंकि लो बेस और जो कोविड के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे उसके कारण। और उनका जो ज्वेलरी डिवीजन है उसने कंट्रीब्यूट किया 85% से, और उनका रेवेन्यू उसका ग्रो हुआ है 200% ईयर ऑन ईयर। वॉचेस और जो वेरेबल्स है उसका हाईएस्ट जो क्वार्टरली रेवेन्यू आया है, ग्रोथ जो है 160% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर। और जो आई केयर डिवीजन है वो ग्रो हुआ है 180% से ईयर ऑन ईयर, और फ्रेग्रेंस बिजनेस है वो ग्रो हुआ है 260% ईयर ऑन ईयर, वह जो फैशन एक्सेसरीज है वो ग्रो हुआ है 300% ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट अपडेट है पीवीआर सिनेमा के ऊपर। पीवीआर ने नए 4 स्क्रीन घाटकोपर में ओपन किए हैं, और अभी पीवीआर सिनेमा के कंसोलिडेट जो फुटहोल्ड है महाराष्ट्र में वो 137 स्क्रीन है 29 प्रॉपर्टीज में, और 233 स्क्रीन है अक्रॉस 51 प्रॉपर्टीज में वेस्ट में। और वो अभी उनका स्ट्रेंथन है और ग्रोथ मोमेंटम काफी अच्छी है फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 23 तक। ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर, और स्टॉक की जो टारगेट प्राइस है वो 2150 है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस के भी Q1 फाइनेंशियल 23 के अपडेट आए, जो ग्रॉस एडवांसेस ग्रू हुआ है 22% से ईयर ऑन ईयर और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके अलावा उनका जो अभी 30 जून तक वो ग्रॉस एडवांसेस था वो 21,699 करोड़ था, और जो उनका डिसबर्समेंट था वो ग्रो हुआ है 156% से ईयर ऑन ईयर, और डी ग्रो हुआ है 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, स्लाइटली डी ग्रो हुआ है 1% से। और जो डिपॉजिट ग्रो है वो 19% है ईयर ऑन ईयर और 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो अभी डिपॉजिट ग्रो होके 20,386 करोड़ है 30 जून तक एज ऑन डेटा। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर्स है। और आरबीआई ने जो नॉर्म्स है वो थोड़ा लिबरलाइज किया है, क्योंकि जो फॉरेक्स इनफ्लो है उसको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आरबीआई भी क्लोजली और कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे जो लिक्विडिटी कंडीशन है फॉरेक्स मार्केट में उसके ऊपर, और जैसे उनको जरूरत लगेगी वैसे वो स्टेप्स लेंगे कि जैसे कि सेगमेंट्स है उसमें डॉलर को टाइट करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव रहेगा उनका कि इंश्योर करेंगे कि ऑर्डरली प्रॉपर मार्केट फंक्शनिंग हो। तो उसमें जो उन्होंने एग्जाम किया है सीआरआर मतलब कैश रिजर्व्स रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीमेंटल और एनआरई टर्म्स डिपॉजिट के ऊपर। और ओवरऑल ये बूस्ट जो फॉरेक्स में इन्फ्लोज बूस्ट करने के लिए ये लिबरलाइजेशन आरबीआई लाने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है भारतीय एयरटेल के ऊपर। भारतीय एयरटेल का जो इंटरनेशनल नीदरलैंड्स का जो बिजनेस है उन्होंने टेंडर ऑफर किया है बायबैक का, तो वो $450 मिलियन है, मतलब अराउंड 3,550 करोड़ है। और जो कंपनी ने इशू टेंडर ऑफर किया है वो परचेस करने वाले हैं तो $300 मिलियन है, उसकी जो वर्थ है वो 5.35 गारंटीड सीनियर नोट्स है। सो ये ऑफर ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था 21 जून का, और ये एंड होने वाला है जुलाई 19 को। रिलायंस इंडस्ट्री की जो कंपनी की रिटेल आर्म है रिलायंस रिटेल, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किया है यूएस
अप्रैल जो मेजर गैप इन कंपनी है उनके साथ, और जो ये पार्टनरशिप रहेगी वो इंडिया को कैजुअल वेयर अप्रैल ब्रांड है उसके लिए होगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, उन्होंने 2 प्रपोजल जो है जो फंड रेजिंग के लिए उसके लिए अप्रूवल दिया है, और जो ये अप्रूवल दिया है वो बॉन्ड और टर्म लोन्स के हिसाब से होगा। तो बोर्ड ने 6,000 करोड़ के जो फंड्स है उसको रेज करने के लिए अप्रूवल दिया है, और ये फंड डोमेस्टिक मार्केट थ्रू सिक्योर लोन, नॉन कन्वर्टेबल लोन और नॉन कम्युलेटिव और रिडीमेबल जैसे और प्राइवेट प्लेसमेंट से होगा फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के ड्यूरिंग, और ये 20 सेगमेंट में होगा। नेक्स्ट अपडेट है लोडा के ऊपर। कंपनी ने जो उनके सेल्स का अपडेट दिया उसमें उनके जो नियरली सेल्स है वो 3-fold हुए एनुअल सेल्स, और अराउंड जो उनका एनुअल सेल्स का बुकिंग है वो 2,814 करोड़ है अप्रैल से जून क्वार्टर में, और ये फिजिकल में उनको स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में। ओवरऑल रिटेल सेक्टर काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर भी हम लोग ये सेक्टर में देखें तो 60% की इंक्रीज हुई है। स्पेशली जो एनसीआर रीजन है उसमें 150% की ग्रोथ देखी है, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ये रीजन से है। ये पॉजिटिव रहेगा डीएलएफ के लिए। इसके अलावा भी हैदराबाद में भी गुड ग्रोथ है, और पुणे और मुंबई रीजनल ग्रोथ देखी जा रही है। तो ओवरऑल हम लोग काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। एनटीपीसी जो उनकी जो फुली ओन सब्सिडरी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है एमओयू गुजरात अल्कली केमिकल्स के साथ, और वो कोलैबोरेटिंग करेंगे। इंडिया फर्स्ट जो ग्रीन अमोनिया ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट है वो सेटअप करेंगे। बजाज की जो 2 कंपनी शिशिर बजाज की जो बजाज हिंदुस्तान और बजाज कंज्यूमर, वो हम लोग को पसंद नहीं है। बजाज हिंदुस्तान जो कंपनी है उसका ऑलरेडी डेप्ट बहुत ही हाई है, और तो ये 2 कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है कंज्यूमर के जो इलेक्ट्रिक और ड्यूरेबल के हिसाब से वो उन्होंने उनका इंक्रीज प्रोडक्शन है रैंप अप किया है क्योंकि फेस्टिवल डिमांड के कारण, बट ओवरऑल अभी वोल्टास और हैवेल्स में लैक ऑफ डिमांड देखी जा सकती है। नायका फैशन ने उनका जो सेगमेंट है मेंस इनरवेयर और एथलेटिक सेगमेंट का वो एक्सपांड किया है, और रेमंड ऐसा स्टॉक है कि उसमें आप ट्रेड कर सकते हो पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट अपडेट है रेलटेल के ऊपर। रेलटेल एक वर्क मतलब अभी काम करने वाली है सर्वाइलेंस सेगमेंट में, और उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो Jan 23 में कंप्लीट होगा। ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स अच्छे हैं क्योंकि वो गुड डिविडेंड यील्ड देते हैं, पर हम लोग देखें तो थोड़ा बिजनेस के हिसाब से और गवर्नमेंट पीएसयू के स्टॉक की वजह से थोड़ा दिक्कत दे सकता है, बट डिविडेंड के हिसाब से ये स्टॉक अच्छे हैं। दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द कॉन कॉल। हैव अ नाइस डे।